एक वार्निंग दे देती हूँ, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, तो ओनली वॉच दिस वीडियो इफ यू रेडी टू डू दैट मेहनत। चलो स्टार्ट करते हैं। Hi guys and welcome back to my channel. Today I'll be talking about the basic fundamental principles of how to create a portfolio. You can use these basic rules in creating your portfolios for design schools. जैसे कि अगर आप IIT, NID के लिए अप्लाई कर रहे हो तो you can use it there, and you can also use it for applying for design jobs. If you want to get into more details of how to create a portfolio for a design school, so I've already made a video about it. It's already there. I've put the link to it on top, either here or here, and उसमें mostly ना सब चीज़ें covered हैं. When I thought of creating this video, I went back to my older video जो मैंने 2 साल पहले बनाई थी, and I thought let's see क्या बातें की है उसमें, and I have actually covered a lot of things there. No wonder people come and say कि अरे your videos help me. Today I am very different from who I was 2 years ago. And 2 years ago, the way I could talk about how I created a portfolio, or the kind of process that I followed, or what are the do's and don'ts, वो डिटेल जिस डिटेल के साथ मैं उसमें बात कर पाई हूँ ना, वो शायद आज I won't be able to do. Today maybe I will be able to talk about how to create a portfolio from a more recruiter's perspective, because in between I have looked at a lot of portfolios. So today I'm going to give you थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इफ यू वांट टू गेट इनटू मोर डिटेल्स, जैसे मैंने बोला लिंक डाल दिया है, वो वीडियो भी देख लेना. नंबर 1, पोर्टफोलियो में डालें क्या? व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माई पोर्टफोलियो? दिस इज सच अ कॉमन क्वेश्चन. इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड यू विल स्टिल हैव एन आइडिया कि पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें डाल सकते हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन डिज़ाइन बैकग्राउंड यू मस्ट बी टोटली क्लूलेस. जो मैंने अपनी 10th क्लास में द काइंड ऑफ ड्राइंग्स दैट हैव मेड स्कूल टाइम में, वो मैं डाल दूँ, या फिर आई लव स्केचिंग, आई लव टू डू इलस्ट्रेशंस, क्या मैं वो सब डाल दूँ, या फिर मैं UI UX के प्रोजेक्ट करके डाल दूँ, मैं कुछ एनिमेशन का प्रोजेक्ट करके डाल दूँ. बंदे कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत यहाँ पे कंफ्यूज माहौल चला हुआ है. कैसे डिसाइड करें? अब इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एक करके तो नहीं बता सकती कि यू पुट दिस स्टफ इन योर पोर्टफोलियो एंड यू पुट दिस. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, डिपेंडिंग ऑन विच स्ट्रीम यू आर अप्लाइंग फॉर और विच जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, your portfolios are going to vary. So what is that one basic rule that you should follow no matter what kind of portfolio you're creating, no matter which background you're coming from? I always like to explain this in a Venn diagram form. तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, तुम भोपाल से हो सकते हो, तुम्हें तुम्हारे 100 तरह के शौक हो सकते हैं जो कि मुझसे लेना देना नहीं है उन चीज़ों का, है ना. इन अ सिमिलर वे आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू माई सेल्फ, लाइक आई एम अ मिलिट्री वाइफ एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल. मैं हिमाचल रिलेटेड कॉमिक्स भी बनाती हूँ. बट यू हैव कम हियर बिकॉज आई वेंट टू IDC IIT बॉम्बे. ये लिंक आ गया ना हमारे बीच में. IDC, तुम्हें भी IDC जाना है, मैं भी IDC गई थी. पोर्टफोलियो ना सेम है, तुम्हें उस कॉलेज के साथ ना वो लिंक ढूंढना होता है. व्हाट आई मीन बाय दैट, तुम ना बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, तुम्हें रॉकेट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें ज़िंदगी में रॉकेट्स बनाना है. बट इफ़ यू गो टू IDC एंड टेल देम that I want to make rockets, please give me admission, they're not going to give you admission because they don't make rockets. So a portfolio is basically a space where you try to create that link with the professors. Now why people keep asking this question, what should I put, is because they haven't done their research yet. Okay, before you start curating your projects you need to do your research. You need to make a list of all the things that you can maybe work on and create portfolios, and you have to make a list of things that IDC IIT Bombay has to offer, and then you have to find a link between these two circles of the Venn diagram. Today I will not tell you कि portfolio कैसे बनता है, I'll tell you कि link कैसे find out करता है. If you understand this rule, you can basically design your portfolios or resumes or prepare for interviews for any job, let alone your design school exams. For today's video, I will take the example of how to curate this this portfolio for a design school exam only. Okay? क्या होता है ना portfolios में? The institute that you're applying for, you need to understand the psyche of that institute. और वो institute किससे बनता है? Professors से, और जो वहाँ पे students होते हैं, right? Now I'll take IDC IIT Bombay as an example for the institute. Now if you want to apply for admission in a master's program in IDC IIT Bombay, the first and the foremost thing that you need to do is have their website for breakfast, lunch, dinner. ठीक है?
वेबसाइट खोल के तो देखो. आई एम श्योर so many of you who are watching this video, they have not opened the website only. अभी तक IDC का वेबसाइट देखा ही नहीं होगा. सीट का देखा होगा because you have to download your brochures and admit cards from there, but IDC का देखा ही नहीं होगा. IIT गुवाहाटी का नहीं देखा होगा, IIT कानपुर का नहीं देखा होगा. वीडियोस देख के काम नहीं चलता. वीडियोस देखने के बाद you have to do things that we are suggesting as well. So go to IDC IIT Bombay website, open it, check it out. अब उसमें क्या चेक करना होता है मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ. Go to the faculty page. You can find information of mostly all of the faculties on the website. What do they specialize in? What do they do? उनके projects क्या हैं? कई बार there is link to the website of the professor in that catalog sort of a thing. So you can see more of what papers they've written or what kind of projects they've worked on. वहाँ से तुम्हें ना आइडिया मिलेगा कि उन प्रोफेसर्स का जो एक्सपर्टीज़ है ना वो किस में है. Now the other thing that you can do is go to the students page. There is an entire repository of the students who've gone to IDC. मेरा भी नाम है वहाँ पे, अंजलि सोल आएगा 2020 बैच में. उसके अलावा there is a repository of all the projects that students have done. Yes, सब है उस वेबसाइट पे. All you have to do is just go to the website and check out the student projects and the faculty projects. उसमें तुम्हें main highlighted projects मिल जाएंगे. But see, this is also a way to understand that the institute is proud of these projects. So you should know about these projects. उसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सबसेक्शन आएगा where you can also see the year-wise student projects. Now this is the gold mine that you direly need at this moment. So depending on what department you're applying for, you can see all the student projects that have happened in the past. अब जैसे for example मैं 2018 के बैच का प्रोजेक्ट खोलूँ तो यहाँ पे मुझे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, एनिमेशन, इंटरैक्शन, मोबिलिटी एंड व्हीकल डिज़ाइन के सारे प्रोजेक्ट्स एक जगह पे मिलते हैं. Not only that, I'm also getting information of all the students that were in that batch with their name and photographs. All this information is in public domain. I check out Mallay's project. Hi Malay, if you're watching this. Malay is also a PhD student at IDC now. So this is amazing. I get to see his email address. I get to see his website. And I get to learn कि इंटरैक्शन डिज़ाइन की पोर्टफोलियो में सिर्फ UI UX के प्रोजेक्ट्स नहीं डालने होते हैं. देयर इज़ सो मच मोर हैपनिंग इन IDC आउटसाइड UI UX. आई नो दिस आइडिया इज़ वेरी प्रेवलेंट कि IIT बॉम्बे जाके अगर इंटरैक्शन डिज़ाइन कर लो तो UI UX सीखने को मिलता है, फिर UI UX की जॉब मिलती है. सेकेंड पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट थोड़ा गलत है. IIT बॉम्बे में जाके यू विल नॉट लर्न UI UX. Okay, you will learn interaction design, you will not learn UI UX. It is an academic institute. It is not trying to train you for the current need of the market. Current need of the market is a lot of UI UX designers, but मेरे opinion में IDC IIT Bombay is untouched from that. They still want to just teach interaction design in its core pure form. ओके सो वो हमें पता ही नहीं होता है बिकॉज हम ऐसे नहीं आते ना कि यार मुझे ना इंटरेक्शन डिज़ाइन करना है तो मैं IDC जा रही हूँ. हम उल्टा आते हैं कि यार मुझे IIT जाना है बिकॉज दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, दिस इज़ नो वंस फॉल्ट, बट दिस इज़ जस्ट हाउ द काइंड ऑफ कंट्री वी लिव इन. IIT ब्रांड नेम की वैल्यू है तो है, अब लोगों को IIT जाना है तो जाना है. बट अगर तुम 2 साल अपनी ज़िंदगी के, इफ़ यू आर गिविंग योर 2 years टू अ मास्टर्स प्रोग्राम एंड गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट लाइक IIT बॉम्बे, आंखें बंद करके मत जाओ. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से. Do your research, see what is it even that you're going to learn. So yeah, it is very important to go through this website. Now the next thing that you have to do is find common things. I'll give you an example. When I was doing my research, तो मैंने एक project देखा था अजंता केव्स के ऊपर. दिस केम विद अंडर इंटरैक्शन डिज़ाइन एंड एनिमेशन डिज़ाइन. मुझे उस प्रोजेक्ट के साथ इतना क्लिक हुआ बिकॉज आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द कंट्री एंड आई वॉज एनी वे रीडिंग सो मच अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड जो इंडियन आर्ट है. सो आई वॉज एबल टू रिलेट विद दैट प्रोजेक्ट द मोस्ट. एंड ऑल्दो मैंने वैसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं डाला है अपने पोर्टफोलियो में, बट कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट डाला था विच वॉज बांकी पिट्टी, विच एवरी वन नोज. ऑल्दो उसमें कुछ टेक्निकल नहीं था, it was purely a comic project, but the way I positioned that project was in a way that the professors or the interviewers will relate to. अब इसमें ये नहीं बोल रही कि तुम धोखा दो, तुम झूठ बोल दो, जाके जो है ही नहीं वो बता दो.
वो पॉइंट नहीं है. अगर वही करना हो तो हम रिसर्च क्यों करते हैं. मैं तुम्हें बता देती ये 5 चीज़ें हैं, ये जस्ट उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बना लो. दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग द रिसर्च इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, वी वॉन्ट टू बी यूनिक, and your portfolio will be unique only when you do your personalized research. Okay, so go out there, अपना कंप्यूटर खोलो, चेक आउट ऑल द प्रोजेक्ट्स. आई एम टेलिंग यू, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. लोग अपने पोर्टफोलियो को सुंदर बना के उसके लेआउट वेआउट में बहुत टाइम लगाते हैं, बट मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू बिफोर यू स्टार्ट अ पोर्टफोलियो इज दिस. दिस गेट्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, विच इज़ how to structure your portfolio. Now, I am known for not giving specific answers but giving very umbrella answers. तो इसका आंसर भी बड़ा umbrella type होगा and you have to personalize it for yourself. I've seen people straight away starting on their projects. या फिर जब उनको portfolio बनाना होता है वो बोलते हैं यार मेरे को ना ये project करना है, ये project करना है. हाँ, मेरा ये वाला project में मैंने ये डिज़ाइन कर दिया, या फिर मुझे अभी ये project बनाना है. ठीक है, वो पहले उस पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं एंड देन यू ट्राई टू पुट इट इन अ स्ट्रक्चर. No, that's wrong. Okay, you don't do that. Basically you just wasting time. If you're interested in UI UX and आपको UI UX designer बनना है, you must have heard of these terms called low fidelity prototypes and high fidelity prototypes and information architecture. सुना होगा ना? So we have to apply the same thinking here. पोर्टफोलियो बनाने से पहले open a Google Doc, नहीं तो तुम पेपर पेन ले लो, anything, and put your project in writing first. एंड ऑल दिस इज इंटरलिंक्ड. मैं तुम्हें अपना ही एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. अपनी जो मैंने स्टडी की, जो मैंने वेबसाइट्स को देखा, जो लोगों के प्रोजेक्ट्स को देखा, उससे मुझे ये समझ आया दैट ओके, टेक्निकल काम होता है बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ हैपनिंग फॉर इंडियन नीड्स एंड दे गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस टू इंडियन आर्ट. जो अजंता केव्स हैं उसको डिजिटली रिस्टोर करने के काम को भी इंटरेक्शन डिज़ाइन बोल सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स मुझे समझ आ गई. फिर ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया था ना कि ये इंस्टीट्यूट है, ये मैं हूँ एंड ये जो हमारा सेक्शन है ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उस इंटरसेक्शन में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना वो उठा के मैंने अपने पोर्टफोलियो में दिखाने हैं. सबसे ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट दिखाएं, इसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि what is the percentage of intersection, which is that one project which is going to click with the professors the most. But in addition to that, I should be very confident about that project as well. When you're applying for jobs, design jobs, तो उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है that your project has actually seen the light of the day. You have the experience of creating something for real people and they're actually using it. एक और इसमें बेसिक जो रूल होता है ना वो ये होता है कि मेक योर एग्जामिनर्स लाइफ ईजी. ठीक है, एज अ डिज़ाइनर तुम्हें अपने एंड यूज़र को समझना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर एंड यूज़र. in this project your end user is your examiner. I understand that we get very anxious because a lot is at stake and there is so much of uncertainty कि यार क्या डालें क्या नहीं डालें, एडमिशन तो चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए. There's a lot of anxiety. We have to cancel that anxiety and we have to put our energy in the right things. देखो हर एक प्रोजेक्ट जो है ना तुम्हारा, उसमें तुम अपने 2 से 5 स्किल सेट्स दिखा सकते हो. If you want to show that you're good with visual design, you can actually make that portfolio look aesthetically pleasing. If you want to show that you're good with wireframing or you know how to create digital stuff, which is also important, maybe one of your projects can be about creating an app or creating a website, or maybe you want to show that you're good with like working with your hands. तो जैसे if you're an electrical engineer, a mechanical engineer, तुमने कुछ अपने हाथों से कुछ बनाया है, you can show that. If you're from an architectural background, you have created some 3D model. अगर मैं product design में जा रहा हूँ तो वहाँ पर ये model making is an important skill, it's relevant, then you can put that. Like this, just decide, make a list of all the things which you think are relevant to that institution and try to put them in the portfolio. Now, before you go to your whatever Illustrator, Figma, wherever you're creating your portfolio, you need to structure it in writing first, like I've already said. So create that structure to the last details. ये वाला प्रोजेक्ट मुझे लगता है सबसे हैवी है, ये टॉप पर आना चाहिए, ये वाला प्रोजेक्ट सेकंड में आना चाहिए. So this brings me to my third point, which is the elements of the portfolio. कि ठीक है, I have decided that these 3 are my strong projects and through these projects I should be able to
showcase 80% of my skills that I have, and 20% maybe later they'll discover. Now we're still not going in the visually creating our portfolio. We're still in the writing space only. We'll write down what are going to be the elements of the portfolio. So depending on where you're creating this portfolio, I created my portfolio as a PDF for कॉलेज एडमिशन एंड फॉर माई जॉब इंटरव्यूज मैंने एक बिहांस का ही अपना लिंक सर्कुलेट किया था. ओनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि यार मैंने ये लिख लिया है, आई थिंक द स्ट्रक्चर इज इन प्लेस, स्टार्ट क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट विजुअली. हाउ टू ले आउट योर पोर्टफोलियो भी एक बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन आता है. आई वुड से टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम people who are already in the institute. This is one of the simplest thing you can do. Now you also know कि how to find out कि कौन कौन स्टूडेंट्स थे इंस्टीट्यूट में, या फिर जो प्रोफेसर्स हैं उनके तुम वेबसाइट्स देखोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार अगर ये लोग ऐसा करें. आई एम नॉट सेइंग कि तुम मुझे कॉपी करो, डोंट डू दैट, बट ट्राई टू फाइंड दोज कॉमन थिंग्स कि यार मुझे इसमें इंस्पिरेशन मिल रही है, आई थिंक आई कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग लाइक दिस, सो लेट मी गो एंड क्रिएट समथिंग लाइक दैट. देयर आर thousands of videos on YouTube talking about how to create a portfolio, and they specifically talk about the technical things. I will link a few videos which I find very useful, so it doesn't make sense कि मैं उसको repeat करूँ. जाते जाते I will give you one last tip, which I've already actually given in the video. Try to make your interviews life easy. You really need to understand who are these people जो तुम्हारा portfolio evaluate करेंगे. If these people are your professors, तो तुम सोचो ना कि वो मतलब ज़िंदगी में उनको क्या काम है. वो इतने टाइम से बच्चों के पोर्टफोलियोज रिव्यू करते आ रहे हैं, उनके पास टाइम कम होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू वरी अबाउट. नॉट सेइंग कि द प्रोफेसर्स आर दिस रेकलेस जब वो पोर्टफोलियोज इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, लेकिन वी हैव टू कंसिडर द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट. सो ये सब चीज़ें इमेजिन करो और सोचो कि अगर यू आर गिविंग गूगल ड्राइव लिंक with 3, 5, 10 folders, and every folder has 2 PDFs and a video and so many things, do you think the professor will have the patience to go through it all? Because I know people do that. So try to do all the work before you send your portfolio forward, so that the professors don't have to do so much work. I know all of you who are watching this video, and if you have watched this video until the very end, you are dedicated. You're मतलब तुमने ना half game already जीत ली. So I know you're working hard, but after watching this video, try to work smart. Okay, hard work कर रहे हो, थोड़ा smart work भी करो, अपनी मेहनत को सही जगह पे चैनल करो. I've seen some people portfolio में आजू बाजू में कुछ गुब्बारे वगैरह लगा देते हैं, glitter लगा देते हैं. Not exactly glitter, but they try to beautify every page so much. I'm talking focus on the content. Okay, I hope this video helped you in some way. If it did, let me know in the comments. If it did not, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, if you want me to talk about some other things, बता दो comments में. I will talk about it. I'm trying to be more regular on YouTube, as you can see. एक और announcement है जो मैं कहीं और announce नहीं कर रही हूँ. If you're watching this video, I know you really want to know from me कि portfolio कैसे बनाना है. So I am going to do a free portfolio review session for as many of you as I can, in the window of 7 days. You will find a Google form link in the description below. All you have to do is just fill that. Yes, these sessions are going to be all for free, but do not forget to subscribe to my channel and like this video, comment. With that, I've come to the end of this video, and I'll see you in my next video. Okay, bye.